Today, we'll see some questions. We'll do some problems based on the concept we have done in the last video. So let's start. So, Based on the concept, we have a question. We have to find out the value of this integral. Okay. So we have to find out the integral of this function with respect to x. So first of all, हम क्या करेंगे? We'll convert this I equal to, can we take 1/4 common? हम 1/4 common ले लेते हैं. Then it will be x square minus 1/4 होगा dx. ठीक है. After that, what we have to do now? इसको can we change? Can we write 1/2 का whole square? 1/4 को can we write 1/2 का whole square? Okay. Now remember the formula. When we have 1/x square minus a square integral हमें find out करना है. So what we'll get? Logarithmic functions थे ना. So what we were getting? 2a log of x minus a divided by x plus a plus c. Remember this formula? So we'll apply this formula and we'll get the value. So क्या मिलेगा हमें? I का वैल्यू क्या होगा? 1/4 as it is हम लिखेंगे and for this one x square and यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? A is equal to 1/2. ठीक है. A is equal to 1/2. So here we have to write 1/2a. 2 into a 1/2. ठीक है. And log of x minus 1/2 divided by x plus 1/2 plus c. Now we'll solve this. I का value will be 1/4 because 2 cancel. So 1/4 log of x 2x minus 1 divided by 2 and 2x plus 1 divided by 2. तो divided by 2 जो है हम cancel कर देंगे. See, it will be 2x minus 1 divided by 2 and 2x plus 1 divided by 2. So 2 cancel plus c. So what value will we be getting? 1/4 log of 2x minus 1 divided by 2x plus 1 plus c. So ये होगा हमारा value, required value. Okay. So we have another question. How will do this question? How will solve this? See, x के साथ first of all coefficient of x 1 है. x square के का coefficient is 1. So no change. Now what we can do, हम इसे solve करके देखते हैं. What value we are getting? X square minus plus 4x minus 5. So it will be x square and okay, x square plus 4x and plus 4 plus 4 अगर हम लिखते हैं then minus 4 and minus 5 already there. So it will be x a square plus 2 का square x square plus 2 का square plus 2 into x. Okay. So it means x plus 2 का whole square we can write and minus 9. Okay. So x plus 2 whole square and minus 9 को we can write 3 का square. ठीक है. इस टर्म में हम break कर सकते हैं. So we'll write here I will be equal to 1/x plus 2 whole square minus 3 का whole square dx. Okay. Now we can use again the same formula x square minus a square का formula. What value will be getting? I का value will be 1/2a and a का value is 3. 2 into 3. Now log of x plus 2 minus 3 divided by x plus 2 plus 3 and plus c. So what value will get? I will be equal to 1/6 log of x plus 2 minus 3 will be x minus 1. X plus 2 plus 3 will be x plus 5 plus c. So this will be the value. So we have another question here. यहाँ पे हम देखेंगे कि x square क्या coefficient is 4. First of all we have to remove the coefficient 4.
Okay, मतलब we have to make the coefficient of x square 1. Okay, so what we can do, we can remove 1 upon 4 हम हटा लेंगे. So what value will get? 4 सबसे divide करेंगे तो x square, and when we'll divide 4 by this one, so we are removing 4 मतलब we are dividing by 4. ये पूरे expression पे we are dividing by 4. So इस पे divide किया we'll get x square, इसको divide किया we'll get 5x, and when we'll divide this one 17 upon 4 we'll get. Okay, ये value हमें मिला. Now when we have something, and now what we have to do, इसको half करना है. So x square minus 5x plus 17 upon 4. So x square minus 2 into 5 upon 2x plus 17 upon 4. There will be no change. What we are doing, हम half कर रहे हैं. तो coefficient of x जो भी है उसे हम half कर रहे हैं. Okay. So and we are multiplying by 2. We are dividing by 2. There will be no change. So we can do. Okay. So again ये जो कोफिशिएंट है हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स उसका स्क्वायर विल ऐड एंड विल सबट्रैक्ट. वी सॉ दैट स्टेप्स ना, देयर आर 4 स्टेप्स हाउ वी हैव टू डू. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप हमें क्या करना है. फर्स्ट स्टेप क्या था, वी हैव टू रिमूव द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो भी वी डिड. सेकंड स्टेप में वी हैव टू फाइंड आउट द हाफ 1/2 ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 into 5 upon 2 into x plus 5 upon 2 का whole square will add and will subtract 5 upon 2 का whole square and plus 17 upon 4 तो है ही यहाँ पे. Okay, so the value will be x square 2 this into this and then this square. So it will be x minus 5 upon 2 का whole square. Okay, ये हटा. नाउ हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा minus 25 upon 4 this one and plus 17 upon 4. So it will be x minus 5 upon 2 का whole square minus 4 है, so we'll write 4 here. Now minus 25 plus 17, तो 17 में से माइनस करेंगे. ओके, 25 minus 17 क्या होगा, we are taking minus common ना, because minus we are taking common. Okay, okay, so it will be 25 and it will be minus 17. So what value will get x minus 5 upon 2 whole square minus 8 upon 2. So this will be 2. So what value we are getting, x minus 5 upon 2 whole square minus 2. So 2 आ रहा है, sorry, this is 4 ना, हाँ, तो 4 8 upon 4 will be 2. So it means square root of 2 का square we can write. 2 को हम क्या लिख सकते हैं, we can write 2 as square root of 2 का square. So we have done. Now here we'll write the same. 1 upon 4 we have done and 1 upon, what value will get, x minus 5 upon 2 minus square root of 2 ka whole square. When we have this value now, what value we'll get, 1 upon 4 and multiplied by one second. See, I will be equal to 1 upon 4 as it is, will write. Now the formula क्या होता है, 1 upon 2a. So 1 upon 2 into a का value is 5 upon 2. Okay, so 2 cancel and then log of x minus 5 upon 2 minus square root of 2 divided by x minus 5 upon 2 plus square root of 2 plus c. Okay, now it will be 1, I will be equal to 1 upon 4 into 5, 20 and log of, what value will get, 2x minus 5 minus 2 root 2 divided by 2x minus 5 plus 2 root 2 plus c. We'll get this value. ये होगा हमारा value.
Okay, We have another question. how can we do this sum? First of all, हम x square को let x square is equal to t, then 2x dx will be equal to dt. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. आफ्टर दैट, सो इट विल बी 1 upon 2 will write here, and 1, it will be 4 t square minus 20t minus 3 dt. Okay, so I will be equal to 1 upon 2, and इसे हम कैसे चेंज करेंगे? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक 4 कॉमन, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, एंड 4 कॉमन लेंगे तो इट विल बी टी स्क्वायर, इट विल बी 5t एंड माइनस 3 अपॉन 4 dt. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सी, t स्क्वायर माइनस 5t, t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 अपॉन 4. सो व्हाट वी कैन डू, इसका हमें वी हैव टू डू हाफ, आई मीन कोफिशिएंट को हाफ करेंगे. सो टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू टी माइनस 3 अपॉन 4. नाउ वी हैव टू एड द स्क्वायर ऑफ दिस कोफिशिएंट, half of the coefficient of t, and we have to subtract also the same square of the square of half of the coefficient of t. तो square of half मतलब 5 was the coefficient of t, so 5 upon 2 will be the half of the coefficient of t. So t square minus 2 into 5 upon 2 into t. When we are dividing and we are multiplying by 2, there will be no change, it will remain same. 3 upon 4. Okay, ये हम बाद में लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल एड विद द 5 upon 2 का स्क्वायर, एंड वी subtract with 5 upon 2 का स्क्वायर, and then subtract 3 upon 4 as it is will write, and so then it will be, ये हम लिखेंगे कैसे, t this and this, t minus 5 upon 2 का होल स्क्वायर and minus 5 square, I mean 25 upon 4 minus 3 upon 4. Okay, so it will be t minus 5 upon 2 whole square minus 25, and this one will be when we are taking minus common, so 25 plus 3 will be 28 upon 4, so it will be 7. So we can write here t minus 5 upon 2 का whole square minus square root of 7 का whole square. ठीक है, so we can write like this, I will be equal to 1 upon 2 into 4, 8 square root of, okay, so 1 upon t square, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर एंड dt. ठीक है, सो नाउ I विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 8 एज इट इज हमने लिखा. नाउ मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2a, तो 2 एंड a का मतलब है दिस वन इज 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज 1. ठीक है, सो इट विल बी, हाँ, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, सो टी माइनस 5 अपॉन, विल पुट द वैल्यू ऑफ टी. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय t minus 5 upon 2 plus square root of 7 plus c. Okay, so we can write like this, I will be equal to 1 upon 16 square root of 7 multiplied by log of t का वैल्यू विल पुट, दैट इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7. ठीक है, एंड प्लस c. सो दिस विल बी आवर आंसर वैल्यू. ओके,
I hope you understood the concept. I hope you understood the sums. For any query, any doubt, please comment. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to click on the bell icon. Thank you.